Okay, so let's start. What do you mean by exception? See, we say two things, error and exception. Error are such a thing which can't be managed. It's so much bigger that you can't manage it using your program. That are generally known error. In Java, there is a class which is known as throwable class. That throwable class is the main. You can say exceptions, errors, all are derived from that throwable class. So from throwable class, we have two things. One are errors and one are exceptions. Exceptions again are further bifurcated into two, checked exceptions and unchecked exceptions. Checked exceptions means which will be checked at the time by your runtime environment, or you can say Java virtual machine and your compilers for the errors and mistakes, and it will be rectified. That are your checked exceptions, and unchecked exceptions are your logical exceptions which are caused because of some logical errors in your program, that are known as your runtime exceptions. Can you give me the example of runtime exceptions? Which are the runtime exceptions? चलो एग्जांपल्स बताओ. चेक्ड एक्सेप्शंस के एग्जांपल बताओ. अनचेक्ड एक्सेप्शंस के एग्जांपल बताओ. Can you all hear me? Am I audible? Am I audible? Can you all hear my voice? हाँ तो बोलो. 10 बार पूछने पे एक बार हाँ बोलते हो. गॉड. अभी तक जितना बोला सब सुना. थ्रोएबल क्लास होता है, उसमें दो एरर एंड एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस में भी दो है. checked exceptions, unchecked exceptions. Unchecked exceptions are also known as runtime exceptions. So can you give me an examples of runtime exceptions and checked exceptions? कोई नहीं. रन टाइम के तो दो. चलो चेक्ड वाले आप मुझे नहीं दे सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड. रन टाइम एक्सेप्शन के तो नाम बोलो जो हम इतने सारे मैनेज कर चुके हैं. arithmetic exception, then null pointer exception, then एक और हमने बहुत किया. Array index out of bound. Out of bound exception. That are all your runtime exception. There is another like class cast exception. के क्लास में से दूसरे क्लास में कन्वर्ट करते टाइम एरर आती है. देन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, वो भी हमने देखा था कि स्ट्रिंग आप पास करो तो प्रॉब्लम देगा. सो दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. देन यू हैव other exceptions like string index out of bound exception. There are some runtime exception. At least 4-5 runtime exception तो आने ही चाहिए. Arithmetic exception, array index out of bound, string index out of bound, then class cast exception, then your number format exception, null pointer exception. 5-6 तो आने चाहिए आप लोगों को. ठीक है. Now let's talk about some of the checked exceptions. क्या हो सकता है checked exception में? नो सच फील्ड एक्सेप्शन. हमने कोई ऐसा फील्ड डिक्लेयर ही नहीं किया, हम यूज करने जाते हैं. वेरिएबल की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट इट विल बी यूज्ड मोर इन योर थ्रेड. थ्रेड क्या होता है? इट्स लाइक मल्टीटास्किंग. जब करना होता है एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट करने, देन वी यूज द थ्रेड. बट लेट्स टॉक अबाउट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ये तो समझ में आता है. वी ट्राई टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास विच इज नॉट प्रेजेंट. तो क्या सबसे पहले वो कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर दे देगा कि नो सच क्लास एग्जिस्ट? दैट एक्सेप्शन इज नोन एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. फाइन.
नो सच मेथड एक्सेप्शन, ऐसी मेथड कॉल करने का ट्राई करते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं है. सच एक्सेप्शंस आर चेक्ड एक्सेप्शन. वो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा. आर यू गेटिंग इट? दे आर नोन एज checked exception. checked exception में एटलीस्ट ये दो आने चाहिए, class not found exception and method not found exception. No such method exception and class not found exception. 2 नाम ये है उन लोगों के. See here. And no such method exception. This both are the checked exception. Okay. Now, so today let's see. First thing, when there are two keywords in Java, one is known as throw and another is known as throws. So what is the difference between the two, throw and throws? Throw means we are raising a new exception. Raising an exception means, I'm not talking about creating an exception. I'm saying that we are throwing an exception, we are raising an exception. मतलब वहां कोई एरर नहीं है रन टाइम, बट हम फिर भी बोलते हैं कि ये एरर आप थ्रो करो, यू रेज दिस. जैसे हमने देखा था कि वैल्यू वी वांट टू थ्रो एन एक्सेप्शन इफ मार्क्स वैल्यू इज लेस देन 0. Marks value less than 0, that is not an error, right? But still we can throw it as an exception. Okay. Now, what is throws? बोलो, थ्रो समझ में आया क्या होता है? पहले ये बताओ. थ्रो का मतलब है कि कोई भी कंडीशन पे हम, वहां लॉजिकल एरर है या नहीं है, हम चाहते हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड एज एन लॉजिकल एरर. सो वी थ्रो एन एक्सेप्शन ऑन आवर ओन. दैट इज अ थ्रो कीवर्ड. And throws is used with the functions where there are the chances of exception to occur, logical exceptions to occur, and it is not managed in that function. That function don't want to manage it, but it tells other calling functions that there are the chances that this exception can occur. Okay, let's do with throw. याद है हमने जो किया था? Or should we do one more of a throw? जल्दी बताओ. One more. चलो. Can you all see the screen? Now, let's have two numbers integer I, j. I equal to 0, j equal. Okay, and let's have the number as 5. Okay, now try. Last program I showed you that we had a loop
and we put try and catch in that loop. Did you try putting try and catch outside the loop? मैंने बोला था ना आप लोग ट्राई करना, आप लोगों ने ट्राई किया बाहर रखने का ट्राई कैच को. What it happened? What change happened? First में ही बाहर आ जाएगा. It will not raise the exception multiple times, right? Okay, now here let's see if I modulus 2 is not equal to 0, means if it is odd, then I want to raise an exception. That is throw new arithmetic exception. It's an odd number. H. Now, being a number being odd, is that an error? नंबर ऑड होना वो कोई एरर है? No. नंबर को डिवाइड करो 0 से तो वो एक एरर है, दैट वी कैन अंडरस्टूड. बट being a number being a odd, is that an error? No. So it shouldn't throw any exception. But I want that it should throw it, because in my program odd numbers are not allowed. I don't want that it should be taken up. Then I can raise my own exception. So throw basically raises an error. Error है नहीं, हम बोलते कि नहीं फिर भी है, हम रेस कर रहे हैं. So catch, either you can use a base class that is exception, or you can use the arithmetic exception. Get message means the message which we pass along with the exception. That is your get message. Okay. So let's display the message. Okay. थ्रो समझ में आया? वहां कोई एरर नहीं है, फिर भी मैं एक एक्सेप्शन रेस कर रही हूं. दैट इज नोन एज थ्रो. वी आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन. See, it's throwing an exception and it is displaying only the message which I gave over here. It is an odd number. It's an odd number. Okay. Suppose I change the value of I to 4. Now no exception will be raised. कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं होगा, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एल्स. सिर्फ अगर ऑड है तो आप एक्सेप्शन रेस करो. सो नथिंग हैपेंड. As the I value is 4, it's an even number, nothing is going to happen. But if it is an odd number, an exception will be raised. So clear with the throw keyword? Yes. Everyone, abhi bhi doubt hai to puch lo. Then I will show you how to create our own exception and throw them. We can throw our own exception also. ये थ्रो एक्सेप्शन एरर नहीं होगी तो भी क्रिएट करेगा ना? हाँ, यहाँ कहाँ कोई error है? Modulus 2, that is not an error. But we are creating an error. We are generating an error. कि भाई 2 error. ठीक है? Depending on your condition, what is asked, you can raise an exception. See,
Let's do one more so you will understand it. Suppose I am having a function f1. Okay. Now let's have a f1 function. Look at it carefully and tell me what should be the output. What will happen? Read the program once. पढ़ा प्रोग्राम एक बार सबने? Did you read this program? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. Can you all see the screen? Did you read the thing what I have typed on the screen? Very good. Now, first thing, program कहाँ से start होगा? मेन Always से। the program starts from main. Main में सबसे पहले हमने क्या कॉल किया है? F1, and F1 is put in inside the try block. Okay, now it will go to the F1. F1 में हमने सीधा क्या लिखा है? What we are doing? F1 में हमने क्या किया है? थ्रो। थ्रो. क्या थ्रो किया? एक्सेप्शन. सो डायरेक्टली वी आर थ्रोइंग, वी आर रेजिंग एन एक्सेप्शन. हमने कोई कोड नहीं लिखा है कि इसकी वैल्यू ये है तो थ्रो करो, कुछ नहीं. फंक्शन कॉल किया, पहले ही एक एक्सेप्शन रेज कर दो. कौन सा एक्सेप्शन रेज कर रहे? एरिथमेटिक एक्सेप्शन. मैसेज क्या दिया? कॉट इन F1, कि भाई F1 में हमने इसे कैच किया है.
ठीक है, तो कैच किया है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ है, क्या डिस्प्ले करेगा, कॉट इन F1। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां से फिर से हम उसे थ्रो कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर सो व्हाट विल हैपन, यहाँ कैच तो हो गया बट यहाँ से उसे फिर से रेस किया, सो इट इज बीइंग रेस्ड सेकंड टाइम, बट नाउ इट वाज ऑलरेडी इन द कैच ब्लॉक, तो वो यहाँ तो मैनेज होगा नहीं, तब वो मैनेज कहाँ पे होगा, इन योर मेन। तो मेन में भी हमने कैच लिखा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करो, सो इट विल बी यूज रनिंग दिस फंक्शन। आप समझ रहे हो, यहां से हमने रेस किया तो कैच यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे कैच हुआ तो यहां से फिर से हमने मेन फंक्शन। आर यू गेटिंग इट? तो ऊपर के कैच में नहीं ले लगा। ऊपर के कैच में इसलिए लेगा, अगर यहाँ पे मैं ये थ्रो नहीं लिखूंगी तो फिर वो ऊपर का कैच उसे फायर ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग कैच मिल गया है, सीधा यहीं पे हो गया, so it doesn't need to catch it over here because the exception has been managed, right? But if I write it throw, तो हम फिर से रेस कर रहे हैं, which will have to be managed in the main function. Let's first see without throwing, okay? So you will get an idea. चलो throw नहीं करता है, सेव करो, let's run it. Static. What it is saying, यहां से हमने एक्सेप्शन थ्रो किया, क्या थ्रो किया है, कॉट इन F1, यहाँ कैच हो गया ओवर हियर इन योर F1 फंक्शन, राइट? अब F1 में से वापस मेन में आया, पर अब यहाँ पे तो कोई एरर बचा ही नहीं, इट वाज ऑलरेडी बीन मैनेज्ड, so now F1 doesn't, your main function doesn't need to handle any errors. But if we write here throw, so again an exception is raised, which will be, just a minute, which need to be managed in the main. Why it didn't did it? Wait a minute. सेव नहीं हुआ था। Now see here, caught in F1, वो क्यों हुआ, क्योंकि यहां से एक्सेप्शन रेज हुआ। सी, डू यू रिमेम्बर दैट प्रोग्राम दैट वी डिड, कि अगर मैचिंग कैच नहीं मिलता है तो वो पेरेंट क्लास में जाता है, पेरेंट फंक्शन में जाता है, कॉलिंग फंक्शन में जाता है, वहां ढूंढता है, वहां पे भी नहीं मिलता है तो उसके भी कॉलिंग फंक्शन में जाता है, टिल इट रीचेज मेन, और अगर मेन में भी आपने मैनेज नहीं किया है तो जावा खुद अपना एरर देगा, राइट? सेम वे ओवर हियर, F1 में मैनेज किया है, ओके डन, तो वो पहले क्या डिस्प्ले कर रहा है, कॉट इन F1, राइट? फिर क्या हो रहा है, तो वहां मैनेज तो हो गया, फिर क्या हो रहा है, आप लोग समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे, चलो इसकी न्यू जगह, एक्सेप्शन को ढूंढ रहा है मेन में, हाँ वो उसके मेन दूसरे में, फंक्शन। यस इट इज सर्चिंग द एक्सेप्शन इन मेन। ओके, सपोज हियर आई एम मैनेजिंग नल पॉइंटर, ओके, तो क्या होगा अब, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कौन सा थ्रो कर रहे हैं हम एक्सेप्शन,
एरिथमेटिक करेगा, नल Arithmetic. पॉइंटर और मतलब कि नल वो एरर पॉइंटर है तो दिखाएगा। यहाँ कैच ही नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं क्योंकि उससे मैचिंग मिला ही नहीं। अब क्या होगा, नहीं मिला तो वो रन नहीं करेगा, उसके एरर दिखा। नो, एरर क्यों देगा, वो उसके कॉलिंग फंक्शन में जाके ढूंढेगा। कहाँ जाके ढूंढेगा, इन द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में हमने अरिथमेटिक मैनेज किया है, हाँ, so it will be directly running that. Let's save and do it. See here. अब देखो caught in F1 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो हमने उसे कैच ही नहीं किया है। अगर कैच ही नहीं किया है तो इट विल गो टू द कॉलिंग फंक्शन विच इज योर मेन, एंड इट विल ट्राई टू फाइंड ओवर हियर कि भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ मैनेज किया है, हाँ किया है, तो वो सीधा वहां पे मैनेज हो जाएगा। सपोज वी आर नॉट मैनेजिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे हम मैनेज करते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो अब क्या होगा, पहले वो F1 में ढूंढेगा, F1 में मैचिंग कैच है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, do we have नो, match, no, so now it will go to the calling function which is main। मेन में से F1 को कॉल हुआ था ना, तो वो कॉलिंग फंक्शन में ढूंढेगा। डू वी हैव अरिथमेटिक एक्सेप्शन मैनेज्ड ओवर हियर, नो, नो, सो नाउ मेन के ऊपर तो अब कोई कॉलिंग फंक्शन हो ही नहीं सकता, सो नाउ योर जावा रन टाइम एनवायरमेंट विल मैनेज इट। ओके, सी हियर, अब किसने मैनेज किया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, java.lang.arithmetic exception caught in F1. This is managed by your runtime environment. We have not managed it. That's why this is abnormal termination of your program. जब जावा को खुद आपके एक्सेप्शन मैनेज करने पड़े, दैट इज योर एबनॉर्मल टर्मिनेशन। इफ वी आर मैनेजिंग इट यूजिंग द कैच ब्लॉक, देन इट इज अ नॉर्मल टर्मिनेशन। Clear everyone up to this? Yes. और दोनों जगह अगर मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन मैनेज कर रही हूं तो पहले जहां पे मैनेज हो गया, the work is completed, but as I am using again a throw, means from here also I am raising an exception, वो फंक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसके कैच ब्लॉक में हम आ चुके हैं, तो अब वो फंक्शन तो उसे मैनेज कर ही नहीं सकता है, तो कौन करेगा, इट्स कॉलिंग फंक्शन विल मैनेज दैट एक्सेप्शन। सो वी यू कैन थ्रो द सेम एक्सेप्शन मल्टीपल टाइम्स। हमने यही एक्सेप्शन जो नया बनाया कॉट इन F1, that exception we are throwing it again, so you can throw the same exception again. That's what I wanted to show you. Clear up to this everyone? थ्रो समझ में आया? तब यस मैम। थ्रोस दिखाती हूँ, चलो। Now suppose the code which I am going to write in F1 might generate arithmetic exception, so here I directly write throws arithmetic exception. When I write throws arithmetic exception, it means there are chances that this function will raise a arithmetic exception, but it is not going to manage it. So calling function will have to manage. Which is a calling function over here? Calling function कौन सा है यहाँ पे? F1 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 को, do you know a called function and a calling function? दो चीजें होती है, वन इज सेड कॉल्ड फंक्शन एंड वन इज सेड कॉलिंग फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन मतलब जिसको बुलाया गया है, अगर मैं आपको बुला रही हूं, आई एम अ कॉलिंग फंक्शन, यू आर द कॉल्ड फंक्शन। तो F1 को कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग F1? इफ मेन, सो मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन, और किसको बुलाया? F1 को, सो F1 इज अ कॉल्ड फंक्शन। So when we write a throws statement,
it means that this function is not going to manage this exception. तो जो उसे कॉल कर रहा है वो फंक्शन को वो एक्सेप्शन मैनेज करना पड़ेगा. वो बोल देता है कि भाई मैंने जो काम किया है उसमें ये एरर आने के चांसेस ज्यादा है, अब तुम अपना देख लेना. वो बता देता है पहले से. सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, आप पहले ही बोल देते हो कि भाई मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बहुत होती है, होगी तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना. तो जो आप में से कॉपी कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, आपके स्पेलिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि जहां मिस्टेक है वो अपने हिसाब से सुधार ले. आर यू गेटिंग इट? दैट इज व्हाट द थ्रोज is used for. Throws indicate that there are chances of occurring of this exception, but I am not managing it, you manage on your own. ओके और थ्रो का मतलब होता है कि हम वो एक्सेप्शन को रेज करते हैं. यहाँ हम कुछ भी रेज नहीं कर रहे, हम अपना एरर जनरेट नहीं कर रहे, प्रोग्राम में ही एरर आने के चांसेस है. ओके सो लेट्स डू दैट. Let's see what it do. I'm just dividing it by 0. तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? डिवीजन बाय 0 करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होता है? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करो तो वो कोई एरर है कि नहीं है? Yes, arithmetic exception will be raised क्योंकि number division by 0 is not allowed in any programming language because we can never divide a number by 0. तो अपने आप कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? arithmetic exception. उसने मैनेज किया है F1 ने. Have we written it in try and catch? Managing an exception means you have to put that code in try and catch. Have we put it in try and catch? कोई ध्यान नहीं देता है. मुश्किल से 1-2 लोग ध्यान देते हो, बाकी सब क्या कर रहे हो? You don't keep your videos on, you don't give me reply, you don't give me reply by even typing a message, nothing. You all just sit. How do you know I'm teaching this except I'm going so slow. I really doubt कि आपका syllabus भी खत्म होगा because I'm repeating the same thing 1,000 times and still I don't get the answers. What do you mean by managing of an exception? What do you mean by runtime exception? Runtime exception का मतलब है logical errors. ये syntactically कुछ भी गलत है. If I divide a number by a number, there is no error in it. There are no syntactical errors. But when we divide a number by 0, logically that is not correct. So a runtime exception is raised. तो runtime exception जो raise हुआ, क्या उसको F1 ने manage किया है? Yes or no? No. नहीं किया है. Because we have not put in that code in try and catch. If you want to manage an exception, you have to put it in try and catch. But it is not put in try and catch. But it has written throws arithmetic exception. उसने पहले ही बता दिया मेरे कोड में arithmetic exception आने के chances है. तो उसे अब किसको मैनेज करना पड़ेगा? Who need to manage that exception? The calling function. The calling function over here is main. So main will manage the arithmetic exception. तो सीधा कहां चला गया? caught in main. और कौन सा एरर है? arithmetic error है, that is division by 0. Got it everyone? Yes, ma'am. Everyone, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो.
Fine. Thank you for saying yes. Chalo. Now let's create. So clear with throw and throws. Throw means हम अपना खुद का exception raise कर रहे हैं. Error नहीं है फिर भी हम generate कर रहे हैं. Throws मतलब मेरे कोड में error आने के chances है, तुम manage कर लो. That is throws. So clear with throw and throws. So then let's make our own exception, user defined exception. खुद का एक exception बनाते हैं. अगर इतना समझ में आया है तो खुद का एक exception बनाते हैं. बोलो. Should we create our own exception? चलो. Let's create our own exception. Now how to create our exception? So first thing, we need to make a class of an exception which has to be derived from the exception class. Okay? चलो बनाते हैं. Class my exception. Okay. It has to extends exception. See, when you want to create your own exception, it has to be derived from the exception class. Create the constructor of it, my exception string s. This is for your message, string message, you can say, which we can pass it to the parent class constructor, that is super s. जो हम लोग लिखते हैं ना e.getMessage, यहाँ पे अगर आपको मैसेज चाहिए, then you need to have this constructor. Okay, and we are passing it to a super class, that is the exception class, which has a method called getMessage. Okay, now let's have that if I modulus 2 equal to 0. So now if it's a even number, then I want to throw new my exception. User even odd exception. I want to display this message that user defined even odd exception. Defined even odd exception. This is a message which I want to display. Now here I need to manage my own exception, that is my exception. अभी तक हमने कौन से exception throw किए थे? The inbuilt exceptions which are provided by Java. Runtime exceptions, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound. Now I created my own exception and I am throwing that exception. Okay. So let's see. See, caught in main. It's been so caught in main user defined even odd exception. So now it has caught a exception which I have created. Are you getting it? Even I can display a number, or I can pass a integer value in my constructor of a exception. Let's do that.
see here, I can have integer x in a constructor. So in my exception class, I need to have one variable integer x number. Suppose this is the variable. In my constructor, I am giving x number equal to x. I'm assigning the value of x to x number. Now suppose I want to have public string toString function. That this is again a method of a exception class toString method, which returns the string. Okay, so return my exception thrown with number plus x number. Now I'm throwing here my new exception, but now I'm passing the value of I. Okay, so caught in main, and here in the catch block I will just write E. Let's see what it do. Okay. See here, caught in main, my exception, because it's a string function, so whatever exception is, it's returning the string to it. We are converting this exception to string when we are displaying it. So its toString function is called. ToString function is for converting any class to string class. So it is displaying a message, my exception thrown with number 4. I value is 4. Now suppose if I value is 10, it will display the same, because we are throwing an exception when it's a even number. So it will display my exception thrown with this number. Clear? You can directly take a string which you can pass it to a superclass. You can take an integer, convert it to a string at the time of display. But this is my own created exception. This is not inbuilt exception. To create your own exception, create a class of your exception, extend it from the exception class. Got it? Everyone? Yes. सबको समझ में आया खुद का एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? Okay, so practice this. Next time we'll do 2-3 programs related to exception handling. तो जिससे आपको कहाँ पे कौन सा थ्रो यूज करना है, थ्रोज यूज करना है, खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना है, पता चलेगा. कंसेप्चुअली समझ में आ गया ना, कहाँ पे थ्रो करना है, कहाँ थ्रोस करना है, कहाँ खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना है. Okay. So let's end here. Now, you don't have a session after this. You are free. Okay? आपका आज थर्ड सेशन नहीं है. फाइन. किसी को कुछ पूछना है? सुना ना मैंने क्या कहा? You don't have a third session. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. So, do anybody have any questions? Okay, then let's leave.